शायद से गाड़ी के वाल या टाइमिंग चेन बेंड हो चुकी है लगता है। और एक मार। हाँ कर बंद। तो ये हुंडई के एक्सेंट है। अभी अपन इसका इंजन नीचे लेकर देखेंगे इसमें क्या गड़बड़ी हो गई। बेल्ट उतार ले जरा। उसका गवर्नमेंट गवर्नमेंट लिया था इसको गवर्नमेंट नहीं थी ऐसी गवर्नमेंट लिया था इसको गप नहीं करन गवर्नमेंट कर रहा ये भाले की कौन जा रहा है मुझे पहले 17 सब केम के ना टाइप करके ना डायरेक्ट उठा के खाई लेता है बेल्ट निकालना 14 पाना दे हाइट हो जाती उनकी। इसकी पुली काटे, पुली निकालना पड़ेगी इसकी।
आज थोड़ा सामान आता देखो लगे तो खोले लगा टाइम लगा अरे वही सिचुएशन में लगा दे ऐसा खोले इसको यार खोल सामने से छोड़। ठीक है चल। छोड़ दे वो क्या ना एक पैड है। एक में कंधे एक ये नट है ना ये जाड़ा है ये नट है ना ये बारीक है दिखा क्या अंदर से वो बाद में केम जाम करते हो। अरे 10 किलो की नहीं उसको लगे ना ये देखो ये उसका टाइमिंग गियर है। ये देखो ये टाइमिंग गियर पूरा ख़राब हो गया है। ठीक है टाइमिंग चेन का इस पे से चेन स्लिप हुई और ये वॉल उसके वॉल पे आ गए वॉल बेंड हो गया उसके वजह से। अब ये वॉल का काम करके लाएंगे अपन। ये वॉल बेंड हुआ है एक ये हुआ है एक ये हुआ है और ये पूरे वॉल बेंड हुआ। अभी इसका हेड पूरा काम करके आ जाएगा। और ये गियर निकालने को स्पेशल एक पुलर लगता है। ये गियर का एक स्पेशल पुलर आता है जैसे ये पुलर है इसका स्पेशल एक टूल है। पुलर अगर आप पुलर से नहीं निकालेंगे ना तो आपका हाई प्रेशर पंप को कुछ भी हो सकता है। इसे ठोक पिट वगैरह ना करे सीधे सीधे पुलर मंगा ले। एक नया पुलर ले ले और पुलर से ही निकाले इसको क्योंकि पीछे से हाई प्रेशर पंप आ जाता है। फिर हाई प्रेशर पंप अगर आप ठोकेंगे तो रोटर वगैरह कोई ट्रबल आ जाएंगे उसका फिर गाड़ी में नुकसान हो जाएगा। इससे बेटर है कि ये पुलर से ही गियर निकाले। अगर टाइम पर आप टाइमिंग चेन डलवा लेते थे तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। देखो ये टाइमिंग रॉन्ग होने की वजह से गियर ख़राब होने की वजह से बुलेट को देखो बुलेट जहाँ बैठती है वहाँ कितना नुकसान हो गया है। निकालिए बाहर। देखो ये होल देखो कैसा बड़ा हो चुका है। देखो देख लो उसमें कितना प्ले देखो उसके बाजू वाला देखो और उसमें प्ले देखो कितना आ चुका है। ये प्ले के वजह से गाड़ी का वॉल बेंड हो चुका है। मतलब ये बेंड हुआ इसकी वजह से वॉल बेंड हो गया। देखो यहाँ पर देखो कितना नॉर्मली एकदम नॉर्मली एकदम कंपनी फेसो फेस। और इधर साइड में देखो कितना प्ले देखो। ये सब फिटिंग के पहले ही देख लेना चाहिए। थोड़ी टूब लगा लेना तो उसको नवी हेड गैस्केट दिखना ना पापा के हाथ डाल रहा था लोकेशन से दिखना चेकिंग ले इसकी है। आर्मीचर फिटच रहता है मोटर। हेड पे काम का ये पूरा है। ये जो वाल थे ये सब क्लियर हो गए। अभी कोई वाल बेंड नहीं बचा है। सब काम हो चुका है इसका। अभी आप इसको फिटिंग करें। उल्टा डाल दो
लगेच बाद में आपले दिमाग बाहेर काढत नाही आपल्याला. काम नाही. ये सब बुलेट है उसके, सब एकदम प्रॉपरली क्लियर है. उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था उसमें बुलेट में गाड़ी का. तो रॉकर का कोई टेंशन ही नहीं हो, ना बुलेट का प्रॉब्लम है ना रॉकर का. थोड़ा ऑयल वगैरह लगाकर डालना चाहिए. सही बुलेट. बुलेट का सही सही चेक करने का तरीका भी, अगर बुलेट प्रॉपरली ओके तो उसको चेक करने का तरीका है. ये बुलेट है जैसे, ये देखो ये वर्किंग हो रही है, इसमें से ऑयल भी आ रहा है. ये देखो ये जो आया है ना अभी, ये प्रेशर ऑयल है. ये बुलेट प्रॉपर एकदम वर्किंग हो रही. कोई बुलेट नीचे टेक जाती है, उसके वजह से गाड़ी के फायरिंग में चेंजेस होते. ये एकदम प्रॉपर बुलेट है. रॉकर अच्छे से चेक कर लो, ये रॉकर, इससे फायरिंग ट्रबल आएगा. वाल पे अच्छे से बैठे लेने. ये उसका केम है. ये उसकी जो सिचुएशन में निकाले ले वही सिचुएशन में वापस से लगा देना है. ये रॉन्ग हो गया. मैंने तो मोबाइल केम की टाइमिंग ऊपर लेना पड़ती है, नहीं तो केम कैसा भी फिट हो जाएंगे. कर ले सकते लेकिन वाल बेंड हो जाएंगे.
पैड वगैरह सब नया डाल दिया। ऐसे ही भाग जाते गिर के। क्या अड़चन? ओके। चमक रही नवी चीज। गले में दिख रहा? ये दिख रहा है, कलर दिख रहा। ये मार्किंग है और ये कलर है। ये यहाँ पर एक मार्क है और ये कलर है। ये यहाँ पर एक मार्क है, यहाँ पे एक मार्क किया होता है। और ये TDC पोजीशन, यहाँ पे इंजन टॉप पे आता है, ये यहाँ पर लेना होना। और ये नीचे बैलेंसर, ये बैलेंसर की टाइमिंग है। ये उसकी पूरी इंजन टाइमिंग है। ओके, अब ये सब हो गया फिटिंग। अब इसको टाइमिंग कवर लगा देंगे, टाइमिंग चेन वगैरह सब डाल दिया इसका। कुर्सिया है कि नहीं? ये उसका स्टेनर है, ऑयल स्टेनर। हाँ, कट राइट। ये फाइनली 100 हो गया फिटिंग अभी।
भर बचा था, एक ऑयल सील नया डालना है उतना। खलास फिर गाड़ी इंजेक्टर वगैरह लगा कर गाड़ी को टर्बो लगाना है बेटा। हाँ नहीं तो बताइए ठीक है, डॉक्टर समझ आएंगे क्या करो डॉक्टर। आगे पूरा मोकला क्या बोलते हैं एक मिनट। हाँ हाँ ये आगे हो गया पूरा इंजन फिट। अभी इसका एयर वगैरह उड़ा के गाड़ी चालू कर लेंगे। मार्सेल बस हाँ मार्शल बस मार वाला एक टाइम और एक टाइम बान बस बस अब सॉकेट लगा लेंगे
सॉकेट लग गया अभी इसके। चलो ओके, चल मार सेल। इंजेक्टर ज़्यादा रिटर्न मार रहा है इसका, 1 नंबर ये ज़्यादा रिटर्न मार रहा और 3 नंबर ज़्यादा रिटर्न मार रहा। बाकी दोनों इंजेक्टर सर्विसिंग करने के बाद गाड़ी पूरी एकदम ओके चालू हो गई। गाड़ी भी क्लियर है, थोड़ी नॉकिंग करेंगे गाड़ी क्लियर हो जाएंगी पूरी गाड़ी, हो गई पूरी ओके एकदम गाड़ी।